Well, welcome back, everyone. Pretty anticlimactic second game. It was unexpected. At least this match to be the most exciting one for today because two firepower of a team but that first inning display, man. I mean, I don't know what was more struggling to watch West Indies bat in the first innings or watching Owen Morgan for last 2 months. मतलब समझ ही नहीं आया क्या क्या struggling था. So it's really it wasn't this match wasn't meant for the fans. Let's be fair. So what are your thoughts, guys? Like, yes, West Indies got absolutely hammered in this game, and the reason why we are doing this pre-match, post-match show before the actual match ends because we know that even PBKS जैसी team भी यहाँ से हारने ही वाली. So we just want those extra minutes to discuss about what happened, what is happening currently in Dubai for that matter. Because I think we are going to play on the same pitch tomorrow, I guess. Yeah. So we will connect that to tomorrow's game as well. Should we be slightly worried, or was it just the batting that let West Indies down? So just gonna open up this panel once again. What are your thoughts, guys? West Indies, they started off as the favorites, but 55 all out. We don't seem like favorites after such a poor performance. वो बोलते हैं ना क्या सर्किट भाई अपने बताते हैं भाई ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया ये प्रॉपर वैसा ही गेम था एकदम प्रॉपर यार मतलब सैटरडे इवनिंग है इतना अच्छा मैच है तो इससे अच्छा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच रात में कर देते वो देख लेते ज्यादा टाइम बट या डिसअपॉइंटिंग टू सी टू हैवी वेट्स डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट फैंस ऐसा नहीं कि खुद के फैंस को क्रिकेट फैंस को तो बुरा लग रहा है कि यार 55 रन बना रहे हो तुम वर्ल्ड कप के मैच में वो भी वेस्ट इंडीज दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दिस टूर्नामेंट सो आई थिंक जितना जल्दी भूले ये मैच उतना बेटर है Well, exactly. मतलब ये मैच ऐसे ही था कि it was like a forgettable game for all the neutral cricket fans, but And not so that's forgettable it. for. Butler That's it. has Okay, hit so the winning runs. okay, so Butler did us the favor and just ended West Indies and our misery of watching this struggling game. So it was Exactly. very tactical of Kyron Pollard to be bowling that over. मतलब उसको भी चाहिए था कि जाने दे खत्म कर देते. But yes, there you have it. England have managed to win this match comprehensively by 6 wickets and net run rate का तो बात आएगा तो बहुत ही आगे जाने वाला है. We'll get to that, but as I was saying, matlab, yes, West Indies would like to forget this match as soon as possible, but England, I mean, they will not want to forget this. What a start to their tournament, and we kind of had the talk, ki, matlab, whether they will struggle without the likes of Stokes, Archer in their team, but they have been absolutely splendid since the first ball, and to defending champions, ऐसे 55 allowed करना is no joke. So Omkar, your thoughts on England's bowling performance and batting की तो बात नहीं करें तो better है because even 4 wicket lose करना is a bit of an embarrassment for even their sake. But speaking about bowling, I mean everyone came onto the party. Timon Mills, he came out after 3 years, yeah, 2 या 3 साल के बाद आया और मस्त स्पेल डाल के गया 2 for 17 in 4 overs. Adil Rashid was unplayable, like prime Shane Warne. He was looking in today's game. So your thoughts overall on English dominance today? आई थिंक सो दैट ये जो डोमिनेंस था इंग्लैंड का काफी था मतलब वो 2016 का फाइनल का फुल बदला ले लिया वो लोग ने आज फुल भड़ास निकाल दी 5 साल की जो थी उनके और मेन थिंग वाज दैट विदाउट आर्चर दैट डेथ बॉलर टिमाल मिल्स वोक्स स्टेप रियली वेल और स्पिनर्स मतलब मोइन अली 18 डॉट बॉल्स वाओ मतलब एज मतलब सीएसके ने ईसीबी को दिखाया कि मोइन अली को ऐसे यूज करना है आप भी ऐसे यूज करो देन ही कैन विन यू द मैचेस as Sanma is rightly saying that Moin Ali and Rashid bowled really well. Even Rashid was like you summed it up that Shane Warne unplayable because अभी पंजाब किंग्स की अगर बात करें they didn't use him really that well. मतलब I guess एक दो गेम दिया and he got around a single wicket and he just got benched him. So मेरे हिसाब से it's like a simple like all the departments in England was just 100% in and West Indies was I guess West Indies thought that this is also warm up game चलो ये कोई नहीं हार गए तो हार गए ऐसे ही टाइम पास उड़ा रहे बट द थिंग वाज दैट द इंटेंट वेस्ट इंडीज का था ना सब लोग घुमाने जा रहे थे apart from Kyron Pollard he was at least rotating the strike playing the ball down the ground भाई वो भी क्या शॉट मार के आउट हुआ है मतलब अरे वो तो लास्ट में भी क्या करे हाँ मतलब तुम
खेल जा सारे ओवर भी खेल जाते ना तो भी एक मैच बन जाता है, उनके पास ऐसी बॉलिंग है एक्चुअली बन मतलब। जाता, एक्चुअली बन जाता। अगर यहाँ पे स्कोर एटलीस्ट 130 होता ना, तो फिर भी अगर इनके 4 अरे विकेट गिरते तो देन वी वुड हैव सेड वाओ। अभी क्या there बोलते you हैं, have it. इसने ओमगा ने बताया ना कि यार 5 साल के बड़ा से ये तो तुम एक आध सीरीज पहले करवा लेते ना, बायोलैटरल सीरीज उसमें कर लेते, ये सब चल जाता। तुम वर्ल्ड कप में आके 50 रन में मत आउट हो यार। बस ये अपने को ये गिली शिकवा है, ये भाई ये ऐसा ना खेलो तुम लोग बस। Exactly, and I was actually going to come to the topic. Matlab, West Indies is known for their firepower and matlab hitting the balls out of the ground. So I wouldn't be surprised if they don't change anything and manage to put up 180 plus in the next match. But is it the right approach? Matlab, even before the start of the tournament, I think Roston Chase ने ये बात कही थी कि he wants to be the Marlon Samuels for this West Indies side, and the reason why they won 2 ICC World T20 titles was because of Marlon Samuel's performance in the final. And it was a tricky wicket in 2012 also, and in 2014 they needed someone to anchor the innings. So they really need someone like Marlon Samuels in this lineup, because blindly आके hit करेंगे तो it is not going to take you anywhere. मतलब on your day you can even score 200, but when it's not your day you're going to get all out for 55. There is nothing in between. ये मतलब आरसीबी अगर जैसा नहीं एंकर है। रहेगा या आरसीबी का फिर भी आज लाइक आरसीबी का क्यों बट इट्स लाइक मतलब वेस्ट इंडीज का द थिंग इज लाइक you either get bundled out for 55 or 200 and there is nothing in between, which is very वो है sad. Like you need to have consistency in your batting order, if you want to progress into this tournament. But coming to you, West Indies, obviously they would want to forget this match as soon as possible, but we all know that T20 World Cup, especially because of it being a group stage encounter, they are not going to get enough chances. I mean, look at the net run rate. They are minus 3.97 already. So मतलब if it comes down, मैं बोला था कि yeah. अगर इंग्लैंड को अपन पूछ लेते कि तुमको क्वालिफिकेशन दे देगा, क्योंकि ये नेट रन रेट से नीचे आना +3.97 दो टूर्नामेंट का मिला के होता है लोगों का, पता है। ये इन्होंने एक मैच के बाद इतना अच्छा रन रेट मिल गया इनको, तो अब ऐसा है कि इनको खाली मैच जीतने हैं, इनको ये नहीं कि हमें कैसे जीतना है। इंग्लैंड का ये कि अगर हम एक आध मैच हार भी जाते हैं बट हम बाकी के अगर मैच जीते तो वी आर थ्रू, सिंपल एज दैट। क्योंकि और 3 ये ऑब्वियसली तब तक नहीं पॉसिबल होगा जब तक ऐसा एक और मैच नहीं होता ग्रुप में। एंड आई डाउट ऐसा कोई एक मैच होगा, क्योंकि इनके ग्रुप में सारी अच्छी टीम्स हैं। हाँ, वेस्ट इंडीज अभी एक ऑफ डे उनका था, अगर एक और ऑफ डे हुआ देन इट इज पॉसिबल कि एक और टीम के पास अच्छा रन रेट हो, बट उसके अलावा आई डोंट सी कि, क्योंकि ऑब्वियसली हर मैच में अगर आप इफ यू क्रॉस 100 110 और समथिंग लाइक दैट, बोथ द टीम्स क्रॉस दैट टोटल, तो इतना भी रन रेट पे फर्क नहीं पड़ता। जितना 50 रन बना पे तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक इंग्लैंड ने आज कुछ अच्छा खाया था सुबह सब प्लेयर्स ने, और सब होप कर रहे थे कि यार चलो स्टार्ट अच्छी मिले, कुछ ज्यादा ही अच्छी स्टार्ट मिल गई इंग्लैंड को, ये प्रॉब्लम हो गई। Yeah, matlab hamesha like the main talking point about this UAE, like counting the IPL as well as the start of the World Cup, जब भी ऐसे matches होते, we obviously have one party to blame, and that those are the pitches. But is it fair to blame the pitch for this match? Because more than the pitch, I think it was absolutely pathetic batting by West Indies. I mean, the way that they threw away their wickets. I agree with Sanket here. अगर चुपचाप 20 ओवर भी खेल लेते, 100 110 120 मार लेते, look at the first game. South Africa, they played all the 20 overs. मतलब एटलीस्ट नहीं खेले होगे तो भी एंड तक लेके गए. They got a respectable total and they made a match out of it. So we never know, अगर 110 तक भी लेके जाते तो looking at how England batted, game could have been on. So और my वर्ल्ड कप है question यार, to you, मतलब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप लेवल का गेम है, तो ऑब्वियसली exactly. प्रेशर डबल रहता है। तो आई थिंक टीम्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा क्या खेलने का तरीका, क्योंकि इंग्लैंड जैसी भी टीम स्ट्रगल कर रही है। ऐसा नहीं कि उनने बहुत इजीली स्कोर चेज किया, उनने भी 4-5 विकेट खोए अपने। तो वर्ल्ड कप का प्रेशर है, तो ऐसा मत समझो कि यार वेस्ट इंडीज के लिए तो हर मैच में 150 रन बनाएगी बिना किसी प्रेशर के। हर टीम पे प्रेशर रहने वाला है, बी इट इंडिया, बी इट इंग्लैंड, बी इट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी आज प्रेशर था, 120 भी उन्हें लास्ट ओवर में जाके चेज किए। ये गेम तुम आईपीएल में खिलवाओ तो उनसे, तो ये गेम 15 ओवर में भी चेज होता है हमारा टोटल। तो आई थिंक वर्ल्ड कप का प्रेशर के देखना पड़ेगा टीम्स को, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जाके हर मैच में एकदम तोड़म तोड़ वाली बैटिंग करेंगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो आई थिंक अपने को ऐसे गेम्स बहुत ज्यादा देखने मिलने वाले हैं ये टूर्नामेंट में। Exactly, yes. And Sanket is saying they need someone calm and composed in their dressing room and even in the management, like MSD. But
But yes, I think it's more to do with the players' ka attitude also. Like even in today's game, it felt like they were playing pretty casually. उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ऐसे लग रहा था. It's very sad to see two times champions and the defending champions currently playing like this. So it was really bad. But speaking about England, so yes, the news has come in. Moeen Ali was named as the man of the match and very well deserving, to be very honest. I mean, he bowled superbly and also contributed, like he's been contributing a lot even to CSK's success in their IPL trophy winning run. So Moeen Ali is someone who really can be the trump card for England if they want to lift this title once again. But speaking about West Indies, guys, मतलब let's just still feel that they are the favorites right now because उन्होंने ऐसे उनका brand कर दिया, like one off day आ सकता है, but let's just assume that they are still the favorites. The biggest match according to me would be against Bangladesh when they play at Sharjah. तो आज देख लिया कैसे वो लोग ने खेल लिया दुबई में. Sharjah is gonna be no less of a threat in terms of their batting. So how should they go about things in such kind of low scoring matches? Who do you think will be the player to watch out for West Indies? And ऐसे कौन player है जो ऐसे मतलब लास्ट तक लेके जाए उनके लिए according to you? मतलब लाइक पता है यू टॉक्ड अबाउट वेस्ट इंडीज एंड बांग्लादेश का गेम. आई थिंक दिस ग्रुप में सबसे डिसाइडिंग गेम रहने वाला है वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका का. Because remember, South Africa is the team which beat West Indies in West Indies. I mean, they have found a formula of how to beat this side because this side is pretty similar to what which played in the Caribbean. So I think वो वाला गेम ज़्यादा डिसाइड करेगा क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज का एक और ऑफ डे आ गया, then I think it's done and dusted for them in this tournament. So I think South Africa will decide. Yes, they did lose the game today, but I still feel that South Africa will qualify from this group. Interesting. And what about Australia? You backing both Australia and South Africa, or you don't have Australia in your mind? No. Australia, we have seen Australia play T20 cricket recently, and they haven't, given much hopes to their fans as well as neutral fans as well. But South Africa, they won their last 3 international series, I guess, against Sri Lanka, against Ireland, and again West Indies in West Indies. So I think that is the team to beat, and England and South Africa will be the two for me. Interesting. And if you would just like to connect this match and whatever happened to tomorrow's big match that we are going to build, because let's not forget कि दुबई में ही next match होने वाला है. So we were all relaxed कि मतलब चलो मतलब we were expecting at least कि दुबई है तो high scoring match होगा, ऐसे assumption था. But looking at this, I know that West Indies batted poorly, but थोड़ा तो pitch भी challenging था ही. So slightly nervous about tomorrow's game if we expect the similar kind of a wicket tomorrow in tomorrow's game as well. नहीं बिल्कुल नहीं. मतलब आई थिंक सो इट विल बी अ फ्रेश पिच. और अगर ऐसी भी थोड़ी पिच रही ना तो हम लोग को आदत है खेलने की ऐसे पिचेस पे. जैसे इंडिया हैव प्लेड देयर मैचेस एट नागपुर, चेपॉक, बाद में अभी सब लोग ने शारजा में भी ट्रिकी विकेट्स पे खेला है. सो आई थिंक सो दैट इट विल वोंट हैपन. और हमारे में सब उड़ाने वाले नहीं है, एंकर करने वाले. सब एंकर करते हैं और सेट होने के बाद सब चालू भी हो जाते हैं. दैट्स द मेन थिंग. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी केएल राहुल भी एंकर करता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑलवेज डज. और अगर सूर्य कुमार को भी बोलेंगे ना तो विकेट स्लो है, ही विल आल्सो एंकर. ही विल नॉट गो फॉर रन्स अगेंस्ट स्पिनर्स और स्वीप शॉट नहीं मारेगा, तो कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट नहीं करेगा. दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ आवर इंडियन टीम, दैट आवर टॉप 4 to 5 प्लेयर्स आर एंकर्स. एंड इवन अगर कुछ हो भी गया तो इवन जडेजा कैन एंकर. And we have seen that हार्दिक पांड्या भी थोड़ा सा मतलब सिंगल लेता है, पहले की तरह विकेट फेंकता नहीं है. मतलब भले फॉर्म में नहीं है बट स्टिल. And also, like Omkar clearly mentioned about the Indian players, Pakistan के lineup में भी ऐसे ही players हैं. I mean, these are the wickets which these people, these players have been brought up playing on these wickets. So I think Babar हो, Rizwan हो, Zaman हो, तो I think दोनों टीम्स में ये है कि एंकर करने की क्षमता दोनों टीम से प्लेयर्स रखते हैं. तो आई डोंट सी कि ऐसे रैश शॉट्स कल हमें देखने मिलेंगे जैसे आज वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड ने खेले. आई थिंक कल विल बी प्रॉपर क्रिकेटिंग गेम जो बोलते हैं ना, वो देखने मिलने वाला है कल हमें. Yes, proper cricketing game से याद आया. I was just gonna say मतलब कि what should be the ideal score that we look. मतलब it is
now अभी तो मतलब ऐसे assurance कर ही दो कि we are not going to see those regular 180 190 kind of a game. So maybe even 160 could be the new 190 in today's times, at least when it comes to UAE ka logic. So Sanket is saying that 140 150 will be an average score. So आज you saw England actually made a mess out of chasing 55 runs. So अगर कल की बात आती है, like it's a big game. I know that we are speaking about India Pakistan for on this stream, but it is a big game in the context of even this World Cup as well, because it is safe to assume that because of the kind of a reputation that Pakistan has playing in this condition, as Abhinav rightly said, they will also fancy their chances as equally as India. So keeping all the records aside, I think tomorrow's game is going to be a crucial one. So Abdullah Amir is saying ideal score is 160. He's a friend from Pakistan, so he's joining the stream to watch from Pakistan. So obviously we'll love to see you on the watch along tomorrow as well. I mean, बहुत मजा आएगा, banter करेंगे. And he's been a regular viewer since the last 1 week or so. Don't worry, Abdullah, but जीत इंडिया की होगी. Don't worry. but, ये but अपन yeah, कल बात करेंगे, इस पे अच्छे से बात होगी इस पे, क्योंकि पहली इनिंग काफी डिटरमाइन करेगी पहली इनिंग की गेम का रिजल्ट क्या होने वाला. अगर हमें फिर से ऐसी कोई जो टीम पहले बैटिंग करी वो दिख गई कि यार 115 120 पे फिर ऑल आउट हो गए, देन इट्स लाइक कि आधा गेम इज ऑब्वियसली डन. बट अगर 150 क्रॉस कर गया, लाइक अब्दुल्ला मेंशन 160 इज एन आइडियल स्कोर, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर रहता है, एक तो वर्ल्ड कप, ऊपर से 150 प्लस चेज करना, and 150 is the perfect score to put pressure on the opposition, while chasing. So I think if the team batting first puts on 155 160, then we are in for a cracker of a game. And speaking about the wickets, I mean, obviously आज के match के stars were obviously the spinners. So there were lots of talks going on about कि whether team should go with 3 spinners or 3 seamers into this big encounter. So lot of people favored कि मतलब 3 पेसर के साथ जाना चाहिए, 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए. But do you think that this match अभी जो हुआ इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के बारे में, will this change the mindset of the management? Will we be tempted to go in with 3 spinners tomorrow? What's your say? Probably मतलब आई थिंक सो. बट अभी इंग्लैंड के पेसर्स ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया, लाइक वोक्स, मिल्स एंड जॉर्डन. So I think so that we'll stick with the same thing, that 3 pacers and 2 spinners. शायद 6 बॉलर अपना कोई स्पिनर आ जाए, रोहित शर्मा या विराट कोहली में से या सूर्य कुमार यादव में से, अगर जरूरत पड़ी. बट आई थिंक सो दैट फर्स्ट मैच है तो मेरे हिसाब से इन द टीम मैनेजमेंट विल स्टिक टू 2 spinners. Apurva should be happy if her wish is granted for 3 spinners. Here Sanket is saying that India should play 3 spinners against New Zealand, but not with Afghanistan and Pakistan. Yeah, ये भी सही है. I mean, क्या बोलते हैं, like Virat Kohli mentioned कि yes, they do have some plans, but the way they use Ashwin in the warm-up games, so I think Ashwin is a sure shot spinner, but Jadeja is also going to play the game, and you can't leave Jadeja out. So Jadeja is a fix, sure shot in this 11, and the last spinner I guess is Varun Chakravarti. एंड क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को बाहर रखने का मतलब नहीं बनता, ही इज द मिस्ट्री स्पिनर ऑफ दिस टूर्नामेंट. So I think one of Ravi Ashwin and Varun Chakravarti will play along with Ravi Jadeja, and if we are anywhere closer to guessing what the bowling lineup going to look like, तो 3 pacers तो होंगे. Okay, so there मतलब already debate चालू हो गया, 3 spinners या 3 pacers. So Saurabh Desai in the comments mentioning I feel Ashwin will be handy than anyone else. He has variation to counter Dew. हाँ, Dew के बारे में तो हम लोग ने बात ही नहीं की. मतलब it was evident in the warm up as well as qualifiers as well. So IPL में उतनी देखने नहीं मिली थी Dew, but अभी slowly मतलब Dew will play a factor. So maybe winning the toss and chasing will be a likely decision by all the winning captains. And we may see India chasing if they win the toss, and even Pakistan would want to back themselves chasing as well. So Abdullah is asking, bowling aside, should Ishan Kishan play tomorrow? I say yes. So he's asking from a Pakistan's point of view. So I don't know if this is like a sledge or anything, or does he really want to see? No, I think he means it. I think he really means ये लग रहा है कि ये लोग है ना, Abdullah wants his bowlers to get bashed by him. That's why he wants to see Ishan Kishan. But किसको निकालेंगे? No. Ishan Kishan is not playing tomorrow, no. Because you can't. Unfortunately. Kohli has mentioned it that Rohit and Rahul are their first choice openers, and Ishan has been
selected as a backup opener, like he himself mentioned it during the IPL कि विराट भाई ने मेरे को बोला है कि मैं as a backup opener select हूँ, या as long as team management लास्ट मोमेंट चेंज करके डिसाइड करती है कि हमें ईशान किशन को मिडल ऑर्डर में यूज करना चाहिए, उसके अलावा आई डोंट थिंक कि ईशान किशन को एज अ ओपनर यूज करा जाएगा as long as one of the openers gets injured. What do you make of this question? Like hype about Varun just because he's a mystery spinner इसीलिए hype दे रहे या he's actually a proper spinner? What, according to you, क्या एक्चुअली क्या हाइप बोल सकते? नहीं है, हाइप नहीं है, Yeah, मतलब इट्स hype लाइक नहीं बोल ही हैज सकते. बोल्ड रियली वेल, मतलब उसको रीड करना काफी डिफिकल्ट है. लाइक अभी लाइक 2017 में रशीद खान आया इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रॉपर प्लेइंग विद ऑल द टीम्स. पहले 2016 में ही वाज प्लेइंग विद मोस्ट ऑफ द एसोसिएट टीम्स. So 2017 से he started playing IPL and more of international cricket. But now we can say that people are easily reading him. People can read him. And चक्रवर्ती 2 साल से आया, but people are not able to read him that much. और उसका एक्शन, his action is quite tricky to read. And also one thing is that Pakistan, मतलब Babar, Rizwan, they, even Fakhar Zaman are playing their first T20 against us. Fakhar Yeah. Zaman debuted, I guess, in Champions Trophy 20 after the 2016 T20 World Cup. So ये जो आई गेस ये जो ट्रिक रहेगी ना, इट्स विल बी इजी. मतलब बाकी लोग, मतलब बाकी प्लेयर्स ने ठीक है आईपीएल में खेला रहेगा चक्रवर्ती को, बट आई थिंक सो कि चक्रवर्ती, बुमराह, ये दोनों को ये लोग ने खेला नहीं है, बहुत कम खेला है. मतलब अभी ना के बराबर है. 2019 में लास्ट मैच हुआ था हमारा उनके साथ, और वो भी 50 ओवर का, और अभी कल T20. तो आई थिंक दैट it will be really crucial to how Bumrah and Chakravarti will perform, because Bumrah, to as usual, he's one of the best bowlers which India has, and Babar has not faced Bumrah much. खाली I guess 2-3 ओवर खेला रहेगा वो भी तभी, और रिजवान ने तो नहीं खेला है. So I feel like these two players will be very much handy tomorrow for You us. know what, regarding Varun Chakravarti's mystery, the thing is India has four spinners. Ravindra Jadeja is not a wicket-taking spinner, nor is Ravichandran Ashwin, and currently Rahul Chahar भी अच्छे फॉर्म में नहीं है. तो विराट कोहली को स्पिनर्स रन रोकने वाले तो बहुत है, ऑब्वियसली बहुत सारे स्पिनर्स हैं उनके इंडिया के पास, बट विकेट लेना मिडल ओवर्स में इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक वरुण चक्रवर्ती इज गोइंग टू गिव विराट कोहली दैट. सो आई थिंक दैट्स द रीजन इतना वरुण चक्रवर्ती के अराउंड इतना शोर है. हाइप नहीं बोल सकते, बट बिकॉज एवरीवन नोज कि कंसिस्टेंटली अगर विकेट लेना है तो वरुण चक्रवर्ती इज द ओनली ऑप्शन राइट नाउ फॉर विराट कोहली. Yeah, even in the comment section उसके बारे में बात कर रहे हैं कि like Sanket is saying that one point is that Pakistan has never faced Varun even Afghanistan. So maybe ऐसे teams के सामने use कर सकते हैं जिन्होंने experience नहीं किया. So maybe we may not see Varun Chakravarti being playing all the 6 matches or all the 5 matches for that matter. ऐसे एक दो team के सामने he'll be like a mystery option. But about tomorrow's game, even I'm not sure whether we should go in with 3 spinners or 3 seamer, because Pakistan is an Asian team and they have most of their experience playing in this condition. I think unka record even in the UAE is phenomenal. I think they won last 10 या 11 matches out of the 14 that they played. I'm not sure about the exact record, but it is really going to be interesting. So before we take Sanket's comment about Maxwell's bowling, let us have one question of India Pakistan. So from India's point of view, because obviously we are Indian fans, who are the 2 or 3 players from that Pakistan team? Because already 12 members का squad announce हो चुका है. Who are those 2 or 3 players who you fear the most? मतलब you feel that they can be the game changers for Pakistan if they decide to cause an upset and end the streak of us. वेल दो माय तो टू ओपनर्स प्लेयर्स है, आर, हाँ वही दो तो ऊपर है एंड दो तो एक ओपनर्स है उनके. एक 3 नंबर पे आता है. तो आई थिंक दैट टॉप 3 इज वन ऑफ द क्या बोलते हैं, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजा आर, according to me, they are going to decide Pakistan's fate tomorrow. So bowling, I think we will tackle the bowling they have, because ज़्यादा pitches इतना haunt नहीं कर रही है बैट्समैन को, तो स्पेशली इंडियन बैट्समैन को आईपीएल में. तो आई थिंक उनकी बैटिंग ही है जो हमें हॉन्ट कर सकती है. एंड हु बेटर देन बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान. Very interesting. मतलब first time I'm hearing कि पाकिस्तान की बैटिंग will be more deadly for us than पाकिस्तान की bowling. मतलब when was The the thing last is, time you heard? sorry Sanjay, the thing is ki in England they troubled England. These three top order batsmen, Fakhar Zaman, Mohammad Rizwan and Babar Azam, they've played really well in the English conditions. So I think that's the reason I am a bit inching towards their batting.
बिकॉज हमें पता है अपनी बैटिंग पे भी हमें भरोसा है, दैट्स द थिंग कि हमारी बैटिंग इतनी फंबल नहीं करेगी जितना बाकी की टीम्स कर सकती हैं. तो आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन आई एम बैकिंग पाकिस्तान विद द वे दे हैव परफॉर्म्ड रिसेंटली. What about you, Omkar? Like as I said, two openers, मतलब Rizwan and Babar Azam, and third one में थोड़ा confused हूँ. एक spinner लूँ कि एक pacer लूँ, ऐसा हो गया. इमाद वसीम या फिर शाहीन हम अब अफरीदी, दोनों में से पाकिस्तान फैन से पूछते हैं ना. Yes, अब्दुल्ला Abdullah, if you're watching, yeah, if you're watching, you can name your मतलब your आपके टीम में से कौन ऐसे जो है who might be a threat, and even you can name about India's threat as well. So I अरे वो want to see बोलेंगे कितने सब लोग threat, विराट को. वो बोलेंगे सब threat है हम उनके लिए. But yes, interesting. Saurabh is mentioning that Rizwan is going to be key. I'm a big fan of Babar and really looking forward to his performance. I think this is the first time that Babar Azam will be playing a T20 match against Virat Kohli. Potentially first and the last time, because we never know. अगर next year के World Cup में India Pakistan एक group में नहीं आए, वैसे तो आ ही जाते somehow. I don't know why. कौन सा तो फ्लैट मैजिक रहता है, हमेशा इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में आते हैं. बट अगर नहीं आए, then we may see them for the last time. Shaheen Shah, Afridi and 2009 and 10 we didn't face them, ऐसा हुआ था. अच्छा हुआ ना, वो 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 टाइम उतना एडिशन गंदा था. फेस ही नहीं किया था. We don't Yeah, speak about exactly. 2009 and 10. We don't speak about 2009 and 10. वो एक हम जो रूल जीते है. हम वही बात करते हैं. 2007 के बाद डायरेक्टली 2011 आया. ये अभी मतलब फिर मैथ्स के 13 क्लास में आया. बचपन से वही. हाँ, फिर 12 में 13 कुछ आया. नहीं था. नहीं, 12 में बस एक फरवरी का एक दिन था, कोहली ने वो श्रीलंका के सामने मारा था बस. हाँ, हम या, लोग को या. मैथ्स No, I में वही think सिखाया था. no, we beat Pakistan in the 2012 ICC T20 World Cup in Sri Lanka. I But we remember. lost at home. We lost at home to Pakistan. Same year. Yeah, Oh but yeah, that I, was a home series to Pakistan. yeah. We lost the ODI Junaid series, Khan. but we won. But I guess we draw. The T20 series was tied 1-1. जुनैद खान was the star. I really don't know where जुनैद खान is. मतलब मुझे तो बहुत डर होती थी यार उससे. विराट कोहली को कैसे उन्होंने ट्रबल किया था. Like it was really amazing. Like guys, your thoughts on Hafiz and Malik? I think they are in the squad for tomorrow, and they will certainly be playing in the middle order. So Hafiz, Malik और इंडिया की स्टोरी मतलब not just 5 years, 10 years, but 15 years से चलती आ रही है. Like these two have been there since ages. मतलब हम जब बचपन में थे तब से इनको देखते आ रहे. So maybe once again. So your thoughts on Pakistan's middle order comprising of Hafiz and Malik? उनके लिए तो आखिरी चांस है, मतलब देखा जाए तो उनके लिए, क्योंकि इसके बाद हम शायद इन दोनों प्लेयर्स, ये ऑब्वियसली हम ये हर साल बोलते हैं कि अगले साल शायद मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक नहीं खेलेंगे, बट वो फिर से आ जाते हैं इसी तरह पाकिस्तान की टीम में. तो आई थिंक दिस इज रियली देयर लास्ट चांस टू end up on a winning note against India. Yes, they have ended up on the winning note, but crucial games में we have not seen Pakistan beat India. So I think this middle order is, I guess, selection of Shoaib Malik in the squad is only because कि वो stability provide करते हैं. With the ball, he can chip in with some overs, and with the bat, he can rotate strike in the middle overs. So I think the top five of Zaman, Rizwan, Babar, Hafiz, and Shoaib Malik is going to be the key for Pakistan tomorrow. I really like how Abhinav casually just ignored what happened in 2017. मतलब that's the best way to go about things. Crucial game था ही नहीं ना वो, मतलब नहीं, मतलब ठीक है, अभी एक तो कुछ तो देना चाहिए ना. अभी अपने पड़ोसी है तो हमें उनकी थोड़ी तो खातिरदारी करनी पड़ेगी ना. अभी सब उनसे लेते जाएंगे तो कब तक चलेगा ऐसा. Yes, Ronak is saying that KL, Kohli, Bumrah and Rizwan, Shoaib and Hassan. Okay, Shoaib Malik तो मतलब bold call यार, bold call. शोएब मलिक एंड इंडिया इज लाइक अ होल डिफरेंट स्टोरी मैन. हमेशा वो आके हमेशा अपने सामने खेल लेता है. तो लाइक कमेंट्स में देख लिया, कोहली के बारे में सब बात कर रहे. कोहली मास्टर क्लास टुमारो. कोहली का 71st सेंचुरी भूल गए क्या? अरे भाई लेट्स लाइक जस्ट टू एंड ऑन अ गुड नोट टू एंड ऑन, मतलब 30 मिनट हो गए हैं. तो लास्ट टॉपिक, Virat Kohli against Pakistan. So T20 World Cups में there is a stat that since the first time that we faced Pakistan in 2012, मतलब Virat Kohli faced Pakistan in 2012, तब से लेके अब तक he hasn't got out against Pakistan, not even once in T20 World Cup. So will we see Virat Kohli coming back in form tomorrow? Because he loves this kind of big occasions, and this is Kohli's format. Let's face it. Even though he's out of form,
but look at his dominance since last 8 years or so. So this is Kohli's den, and Pakistan, Virat Kohli, ICC Cricket World Cup, like it all adds up to a perfect game for him to come back. So what are your thoughts, guys, quickly on Virat Kohli? Will we see the good old vintage Virat Kohli back again tomorrow? वुड लव टू सी हिम, वुड रियली लव टू सी हिम एटलीस्ट। मतलब यार 100 का लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 50 to 70 भी बनाए तो भी बहुत रहेगा। ऐसे पिचेस में अगर 50 to 70 बैट्समैन बनाते हैं ना, तो और अगर कैप्टन बना रहे और विराट कोहली जैसा क्या प्लेयर बना रहे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आ ही जाता है बॉलर्स पे भी उनके। आई गेस टॉप 3 में से अगर 2 लोग भी कल लंबा खेल गए ना तो गेम अपना है, इजीली अपना है। मैं आज मैंने दो इनिंग देखी, आज मैंने 2 मैच देखी है। एक तो 2012 का मैंने मैच देखा था, टीवी पे आ रहा था, और मैंने 2016 का मैच देखा था जो उसके बाद उनने टेलीकास्ट किया था। एंड दोनों में विराट कोहली का मास्टर क्लास देखने मिला था, लाइक अपूर्व मेंशन। तो होपफुली व्हेन ही सीज एन ऑपोजिशन वेयरिंग ग्रीन, कुछ अंदर से आग, अलग आग कहीं से तो आती है विराट कोहली के अंदर। तो आई थिंक या तो बोलना पड़ेगा किसी को कि भाई तुम भी ग्रीन पहन के बैठो तो मैं बैटिंग करने जाऊं, तब जाके हम विराट कोहली को देखेंगे कि ऑब्वियसली, बट वी डू एक्सपेक्ट अ बिग स्कोर फ्रॉम कैप्टन टुमारो, एंड आई थिंक ही विल गेट दैट, बिकॉज प्रेशर, दो बड़े प्लेयर्स के ऊपर आप एक्स्ट्रा प्रेशर डालोगे, दे कम आउट ऑफ इट विद फ्लाइंग कलर्स। तो आई थिंक विराट कोहली के ऊपर कल प्रेशर जरूर होगा, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट बाबर आजम के ऊपर भी कल प्रेशर है। तो एंड दोनों कैप्टन है, एंड आई गेस इससे बेटर राइवलरी नहीं हो सकती, एंड नो बेटर वे टू किक स्टार्ट आवर कैंपेन एज वेल एज पाकिस्तान कैंपेन टुमारो। तो होपफुली कल यही टाइम पे हम दोबारा ऐसे अपनी क्या बोलते हैं, ऐसी स्माइल के साथ बैठे होंगे यहाँ पे कि यार चलो पटाखे फोड़ के आते हैं बाहर थोड़े। वेल टू एंड ऑन अ वेरी मतलब ऐसे डिफिकल्ट नोट, आई नो कि मतलब थोड़ा सा तो नर्वसनेस मैंने नोटिस किया इन अभिनव, सो आई विल मेक हिम अ लिटिल बिट मोर नर्वस एंड इवन मेक ओमकार तो कॉन्फिडेंट बंदा ही है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क फॉर योर थोड़ा सा प्रेडिक्शन। मेरे में भी थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा नर्वस हूँ। आई एम जस्ट नॉट शोइंग इट, बट थोड़ा सा अंदर से तो Is this the first time since a long time that we are feeling nervous about facing Pakistan in a World Cup game? When was the last time you faced this? 2007 मैं तो हर साल होता है भाई, मैं तो हर साल रहता हूँ, क्या बोलते हैं 2007 फाइनल था मेरा, तभी छोटा था, बहुत टेंशन था। ये संकेत भाई ने अच्छी बात करी है, पटाखे फोड़ने टीवी नहीं फोड़ना कल। तो या बट Both the parties. बोथ द पार्टीज। हाँ नहीं, एक जगह तो एक देश में तो ये दोनों में सेम होने वाला है, होता ही है। तो आई थिंक लास्ट टाइम देखो, मैं तो हर इंडिया पाकिस्तान के गेम के पहले नर्वस रहता हूँ, क्योंकि पहले के 10 ओवर ही है जिसमें मैं नर्वस रहता हूँ। अगर पहले के 10 ओवर अच्छे चले गए अपने तो अपन लोग मैच जीत रहे हैं, ऐसा रहता है। बिकॉज इफ यू नोटिस द हिस्ट्री सेज तो कि आप पहले 10 ओवर अच्छा परफॉर्म करो कोई भी फॉर्मेट हो, तो आई थिंक उसके अलावा देन वी आर ओके विद इट फॉर द नेक्स्ट 30 ओवर्स, अगर हम पहले 10 ओवर में अच्छा कर लें। Saurabh Desai said this is the closest India-Pakistan since 2003. Okay, so I wasn't around, and I think most of us weren't around to follow that. मतलब 3-4 साल के रहेंगे लाइव तो नहीं देखा था, अभी रिसेंटली हाइलाइट्स देख रहे हैं ये मैचेस के। Yeah, but I could imagine. Yeah. वो बॉलिंग लाइनअप क्या थी? शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक, शोएब अख्तर, वकार यूनिस, वसीम अकरम। आई मीन कौन फेस करना चाहेगा यार ये बॉलिंग लाइनअप? कोई नहीं। तो आई थिंक I think Saurabh is pretty bang on with his comment that it is very close this time around. Also, just to end on a very positive note, tomorrow will be a test for Team India and also Indian audience maturity. So obviously we don't want it to happen, but in case agar things don't go our way, it is our humble request, guys, don't react in some way that you may feel like regretting aage. Like, yes, we all love to banter, yes, we all love to see Pakistan ko harana hamesha World Cup mein, but just a disclaimer, agar in case nahi hota, we should know how to be respectful, because we have to also accept the fact that there are two teams that are going to play tomorrow and they always play in the World Cup. So I know a couple of Pakistan friends and I know a couple of Pakistan people on my Twitter also who were respectful in all those Indian triumphs since a long time. So I think if agar aise hota hai, then I would just want our end audience also to be mature and gracefully accept whatever is to come. But if even if we win,
I think we should be level on our feet as well. Like banter and all, तो वो तो होते ही रहता है. Even they are going to banter us, we are going to banter us, but we should know how to respect the teams. We should not try to be toxic and cross the limits, because अभी तो मतलब we are all mature audience, so we should know what is right and what is wrong. And the ultimate aim, no matter what happens, is lifting the trophy. So and not breaking your TV sets. Yes, बिल्कुल. Yeah, perfect, yes. नहीं बट यू नो ऑन अ सीरियस नोट देखो, अगर कल जो भी हो, ठीक है, दोनों देशों के लिए कल जो भी हो, सुबह फिर से होगी. ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके नॉकआउट स्टेजेस में भी मिल जाए. तो दैट इज नॉट द लास्ट थिंग. ये याद रखना कि कल का गेम आखिरी गेम शायद ना हो ये T20 वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान का. You want to answer this, guys? What is your India's game ritual? Game नहीं, day मेरा तो ritual? फिक्स है. मेरा तो फिक्स है. मेरे पास एक इतना बड़ा भारत का झंडा है, वो मैं अपने बालकनी में सुबह सुबह जाके लगा देता हूँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है. तो आई थिंक दैट इज द ओनली रिचुअल कि कुछ भी हो, मेरे को वो झंडा अपने घर के बाहर चाहिए. एंड दैट हैज बीन द लकी फ्लैग. मेरे खाली 2017 में नहीं लगाया था वाला फ्लैग, तब अरे यार कभी लगाना चाहिए था यार, तभी ट्रॉफी मिल जाती थी 8 साल तक. So we don't blame the no balls, we blame Abhinav. Yeah. I blame myself. यार ये क्या किया यार. मेरे पास फ्लैग तो नहीं है, बट या आई डोंट हैव द फ्लैग एट माय होम. बट द थिंग इज यार, जब भी इंडिया का मैच रहता है, जर्सी तो हम लोग सब पहनते हैं, एंड आई जस्ट आफ्टर हैविंग अ शावर आई जस्ट प्रे टू गॉड दैट बस आज जीतना है, आज जीतने दो बस. जस्ट शावर योर ब्लेसिंग्स ऑन अस एंड सो दैट we'll just keep going ahead and towards the glory which we have awaited on. कल जिता दो स्कॉटलैंड या नमीबिया से हरवा देना चलेगा. नहीं ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा. सब जीतना है. कल जीते तो सब जीतना है, ऐसे. कल नहीं जीते फिर भी सब जीतना है. तो इट्स लाइक वी डोंट नो. I guess Sanjay, you should actually change the scenarios. You should not ask people that अगर आप पाकिस्तान से हारे तो आप वर्ल्ड कप जीतना चाहेंगे. You should always say that ये जीता है वो भी जीतना है. You should have that agenda. I think so. Exactly. Change your mind. So yes. Saurabh is saying he watches all the pre-match shows from Pakistan's Game On है, Norman Niaz वाला, to Sports तक, and now Third Man Cricket Show. वाह, मतलब इससे ज़्यादा और क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है. So even do join us tomorrow, guys. Watch along में तो बहुत मजा आने वाला है. Yes, the watch along will be returning after the IPL final. इंडिया का मैच है, and we'll be having guests from Pakistan as well. So it is going to be a great show to be on. I think Anas Khan is going to be from the Pakistan side, and there is one more unconfirmed guest, and if it gets confirmed, we'll be updating you on that. But really, guys, it is going to be a wonderful. Oh, 2019 वाले. अरे वो बेस्ट है. They are my favorite. But अगर मिला तो मतलब they will be like amazing. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए. Yes. But yes guys, 38 मिनट डिस्कस हुआ. नॉर्मली पोस्ट मैच शो का हम लोग 15-20 मिनट में निपटा लेते हैं, बट since tomorrow is India Pakistan game and we were quite nervous, it is also good कि जो भी अंदर था वो मतलब बोल देते स्ट्रीम पे. So even thank everyone for joining us in the comment section as well. Yes, Sanket, craziness for cricket in Indian fans. 2017 नहीं भूलेगा. नहीं, हम लोग तो भूल गए, पाकिस्तान वाले नहीं भूलेंगे of course, and for obvious कभी नहीं reasons. भूलेंगे, बहुत टाइम बाद जीते थे ना वो. Yeah. Cannot wait for tomorrow's show, man. Cannot wait for tomorrow's match basically. But yes, मतलब बहुत मजा आने वाला है. Not just India Pakistan, but also Bangladesh versus Sri Lanka as well. We are slightly forgetting, but even that game is very important. मतलब वो दोनों qualifier से आए हैं. We'll be covering that match as well. Pre-match show रहेगा 2:45 PM and post-match show right after the pre-match of India Pakistan. I know कि वो match थोड़ा ऐसे sideline होगा, but it is a very interesting game. So do support the people who will be there analyzing that game for you as well. I know कि मतलब थोड़ा high on spirit रहेंगे, अपने rituals करते रहेंगे, but if you are there to watch in the pre-match show for the first game as well, you would really love it. So कल बहुत मजा आएगा. Asia Cup Day 1 tomorrow. Yeah, Asia Cup Day 1, nice one. Yes. Hopefully we see Asia Cup repeating in the semi-finals. 4 Asian teams. Wow. हो सकता है, quite possibly given the pitch record. But yes, guys, it was. Why is Nicholas Puran ignoring? अरे Nicholas Puran मतलब क्या बोले? चल ले लेते तेरा क्वेश्चन. मेरा रिचुअल नहीं चलता आजकल. मेरा रिचुअल हर गेम में सेम होता है. जब दिनेश कार्तिक इज बैटिंग, आई सिट ऑन द कॉर्नर ऑफ द बेड. अगर दिनेश कार्तिक है ही नहीं तो
कमेंट्री रिचुअल चलेगा ही में नहीं, म्यूट करके इसलिए तो बैठो। बोल रहा है रिचुअल नहीं चलता, दिनेश कार्तिक खेल ही नहीं Okay, था। okay, got it. But yeah, jokes aside, guys, it was great hosting you. Thanks everyone for tuning in the comment section as well. I know we all are excited for tomorrow, and at the same time, as Abhinav mentioned, kal maybe we will be very happy or very sad. So there is नहीं, nothing in happy between, रहेंगे, and happy not रहेंगे। just नहीं भाई, हाँ. हार गए तो मैं सैड रहने वाला हूँ भाई। बहुत हाँ, Of नहीं, course, and happy रहेंगे, we are, everyone will have a smile on their Yeah. face. but we can assure you guys कि मतलब पूरा माहौल शो पे हैप्पी या सैड नहीं रहेगा, because we have guests from Pakistan. So अगर in case everything goes wrong from our end, there will be some happiness being spread on the show, because we are a neutral platform. We all love the game that we cherish and watch very closely. So there will be lots of fun tomorrow, no matter what happens. Result doesn't matters. All that matters is these two teams competing. So we are hoping कि कल better than what we saw today in the second match. Obviously, we see a very close game contesting tomorrow. So let's just close the curtains for today and build up for tomorrow. So thank you everyone. Thank you Abhinav. Thank you Omkar for joining us. Thank you everyone who tuned in the comments as well. Your support has been massive. Do follow us on all the social media platforms. We are the Third Man Cricket Show. Do subscribe to us on our YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon, so when we go live tomorrow, you don't miss out. So see you all tomorrow. Have a great sleep, and wishing all the best to Team India and also Pakistan, if any Pakistan कल हम लोग ही जीतेंगे। Let's be viewer is optimistic. watching. So Ronak is saying chal ave, result matters. Yes, result will matter. Result of course at the end matters. संचित का जर्सी नहीं आया कल, I think before the match आ जाए तो better है, but we'll wait and see what happens. So thanks everyone. This is Sanjit Desai here signing off. वैसे अगर end नहीं किया तो बहुत ही ऐसे questions आते रहेंगे, but really